Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगे ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन ये बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर ये जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी ये देख बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम बढ़े पार ये एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पार प्रति वीडियोज रे मु PDF लिंक देवी ताकू ये ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड करि परिबो PDF को लास्ट रे ये जो मोर चैनल नेम अच्छी या क्लिक करी तुम ये प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई रखी तुम सर्च कर ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक रे आमे पढ़िबा अबाउट द पैरेलल फिल्म। सो प्लेन पैरेलल थिन फिल्म कहले आमे बुझिबा इट इज ए ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म हैविंग यूनिफॉर्म थिकनेस। वेज शेप्ड फिल्म रे हमर मन पकाओ थिकनेसटा गोटे जगह रे गोटे साइड रे पूरा जीरो थिला आउ जेमती आमे आकु आरपट साइड को बढ़ुचु थिकनेसटा बढ़ी बढ़ी जाउची। सो थिकनेस वाज नॉट यूनिफॉर्म इन केस ऑफ वेज शेप्ड फिल्म, किंतु इन केस ऑफ पैरेलल फिल्म एठी थिकनेसटा यूनिफॉर्म रहिबो। एंड this film is bounded by two plane parallel surfaces. As you can see, this is the thin film. Suppose it is having a thickness t, okay, small t. Now when you incident a ray of light, as you can see, this is the incident ray on this parallel thin film, then it gets partly reflected from the top surface। ए पट को गोटे पार्ट गला आउ गोटे पार्ट एठू रिफ्रैक्शन है कि बॉटम सरफेस रे हिट कला ट्रांसमिशन है कि हला पुनी बॉटम सरफेस रु फर्दर रिफ्लेक्शन हेबो ए पटे। ओके, सो ए जो दुईटा आमे रे पाइला रिफ्लेक्टेड रेज, ए दुईटा पैरेलल रेज रहिबो एवं ए दुई रेज भितरे इंटरफेरेंस हेबो। ओके, सो एठी सेही कथा एठी साइड रे से लिखुची जे गोटे स्मॉल पर्सन ऑफ ट्रांसमिटेड रे जोटा कि भीतर को जीव है दिस वन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द फिल्म बाय द बॉटम सरफेस ऑफ द थिन फिल्म एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ लाइट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द लोअर सरफेस ये पटे पुणी बाहर को पळे आसीबो। ओके, सो थिन फिल्म्स have a tendency गोटा गोटे जिनस मन रख दे have a tendency to transmit incident light strongly but they reflect only weakly। so reflected light जोटा एटा जीव तार intensity टा बहुत कम रहिबो। okay, so the intensity of this reflected rays reduce to a negligible strength after suffering two reflection। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଏଠି କରିବା, ଏଠି ଆମେ କନସିଡର କରିବା only the first two reflection, only the first two reflection we are considering here and these two rays are derived from the same incident ray which is this one ହେଲା same गोटे incident ray ରୁ ଆସିଛି and they appear to come from two sources। ओके, एठी सोर्स गोटे आमे कहिबा S आ गोटे हला S प्राइम और S टेस्ट। सो ए दुई जो रिफ्लेक्टेड रेज आसिला दे appear to be coming from these two sources, okay, which are now obviously coherent sources। okay, so as you can see they appear to come from two sources which are situated just below the film and these two sources are obviously virtual sources तेणु करी एटा dotted line रे देखाइछि। okay, and these are supposed to be coherent माने यांको भितरे फेज either constant रहिबो किंबा फेज डिफरेंस जीरो रहिबो। okay, same फेज रहिबो। so the reflected waves travel parallel with each other, parallel path रे जिबे and तेणु करी एबे तांको भितरे इंटरफेरेंस टा को जगह रे हेबो obviously at infinity। okay, so we call this also as the two beam interference। okay, अच्छा एबे जदि आमे कंडीशन फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ताकू डेराइव करबा को चाहिबा एक्जेक्टली सेम हमर जो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म केस रे आउ वेज शेप्ड फिल्म केस रे आमे देखुतला एठी भी सेम मैनर रे ही यार डेरिवेशन हेई परिबो हैला। सो आमे
एठी गोटे काम करबा एठी हमें ए सब जिंस को समराइज कर देबा एंड वी कंक्लूड दिस समरी विथ द फॉलोइंग पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट रे the condition of interference depend on mu t, that is the product of refractive index and thickness of the film. तापरे wavelength lambda upare ଆଉ angle r plus theta upare. So in case of parallel films this factor mu t is a constant one when parallel beam of light is allowed to fall on the film, and the angle r plus theta is also constant. So ei jo interference ro condition ta exactly depend करुची केवल तमर wavelength lambda upare. Okay, second point रे ये कहूची when the parallel beam of monochromatic light, monochromatic means तमे जानिछो single wavelength रो light ହେଲା is allowed to fall perpendicularly to the film, then the entire film appear either uniformly dark or uniformly bright. Dark भी ହେଇପାରେ bright भी ହେଇପାରେ depending upon the condition. कौन से condition? When the thin film has a thickness of lambda by 4 mu. एठी गोटे जिनस देखो नोट करो एटा mu dash नो हैला एटा होची lambda by 4 mu तापर एटा कॉमा दिया हिची. ओके सो याको टिके ध्यान दबो lambda by 4 mu, then 3 lambda by 4 mu, 5 lambda by 4 mu. That means the odd integral multiple of lambda by 4 mu ei jinsota ethi se kohuchi. Then the film will appear to be totally bright. Okay, and when the thin film has a thickness of lambda by 2 mu, 3 lambda by 2 mu, 5 lambda by এটা 4 mu হবনি এটা 2 mu হব. ওকে সো the odd integral multiple of lambda by 2 mu এমতি যদি হেলা তাহলে the film will appear to be totally dark. Okay, now let us see the third point, the path difference. It will only change when there is a change in the angle of incidence. Angle of incidence যেতেবেলে চেঞ্জ হব সেতেবেলে হি যাইকি path difference টা চেঞ্জ হব. ওকে नेक्स्ट 4 पॉइंट रे देखो एठी से कहूची गोटे जदि पैरेलल बीम ऑफ व्हाइट लाइट नेला आमे व्हाइट लाइट माने आमे जानिचु एठी जे पॉलीक्रोमैटिक लाइट मीन्स मल्टीपल वेवलेंथ एथिरे अछि बागनी सहनाला. देन व्हेन इट फॉल्स ऑन ए पैरेलल फिल्म then those wavelength having a path difference which is integral multiple of lambda they will be absent from the reflected light and the rest of the colors will be reflected and hence the film appears to be uniformly colored with one color being absent. को color टा जहाँ पाई path difference टा जहाँ रो wavelength पाई integral multiple of lambda ही थिपो. Very simple. Then point number 5 एठी से कहूची we know that the brilliant interference colors माने बहुत भलो स्पष्ट interference color observe आमे करि परिबा only in case of thin films and not in case of thick plates. Okay, film टा जेते thin हबो जेते पतला हबो सेति की बढ़िया interference आसी परिबो, such as for example the window panes or glass slabs. सो यही जगार थिक प्लेट्स हो जाऊँगी तेणु इंटरफेरेन्सटा एत भल से आम ऑब्जर्व करिपरिबा नहीं कहीं बिकॉज द लाइट वेव्स कैन इंटरफेयर ओनली व्हेन टू इंटरफेयरिंग वेव्स आर हैविंग coherency. Okay, when they are highly coherent. So this coherence can be achieved only when the parts of the same group of wave trains overlap. ओके समान ग्रुप रो वेव ट्रेन्स जेतेबेले निजे निज सहित ओवरलैप करिवे सेतेबेले ही आमे कोहेरेंस को अचीव करि परिबा. एंड इन द केस ऑफ थिक फिल्म्स कौन होउची असुविधा देयर इज ए सुपरपोजिशन ऑफ डिफरेंट वेव ट्रेन्स. सेम वेव ट्रेन दरकार होतला सेम ग्रुप रो किंतु थिक फिल्म्स रे different wave trains आसी जाउची which cannot produce interference because they will be incoherent to each other and do not maintain the constant phase difference जोटा कि basic requirement for interference. constant phase difference between each other हेबा कथा किंतु in case of thick films ए जिनसटा हेई पारु नाही. ओके सेति पई एठी interference हेई पारुनी. आगु बढ़िबा पॉइंट नंबर 6 एबे टिके मैथमेटिकल जिनस देखिबा. देखो ये कहूची फॉर इंटरफेरेंस टू बी ऑब्जर्व्ड इन
thin films, the optical path difference delta যদি আমি ୟାକୁ କହିବା between the superposing waves, it should be less than the coherence length. That means delta is very less than L0. এই delta ର value ଆମେ already ପୂର୍ବ chapter ରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ୟାର value ଆସିଥିଲା 2 mu t cos r plus theta minus lambda by 2. lambda by 2 factor କାହିଁକି ଆସିଛି? when the reflection is occurring from denser medium, তাহলে according to Stokes treatment lambda by 2 factor ଗୋଟେ addition ହେବ। so this part is less than your coherence length L0। আচ্ছা, কিন্তু এই যে coherence length L0 ର ଆମେ value ଜାଣିଛୁ it is equal to lambda square by delta lambda, ତାକୁ ଏବେ ଆମେ put କରିଦେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ t କୁ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ରଖିବା, the thickness t we have taken on the LHS, ବାକି ସବୁ ଟର୍ମ କୁ ଆର ପଟକୁ ନେଇଯିବା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡରେ RHS ସାଇଡରେ ନ୍ୟୁମରେଟର କୁ ଦେଖ, here lambda by delta lambda is very greater than half, so for normal incidence ଆମେ ଏଠି cos r plus theta କୁ এই ପାର୍ଟ କୁ 1 ବୋଲି ନେଇ ପାରିବା। so ଏବେ ଇକ୍ୱେସନ ଟା ଟିକେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ହେଇଯିବ, t is less than lambda square by 2 mu delta lambda, এটি lambda square by delta lambda is nothing but the coherence length L0. thus we can say that the interference in thin films can only be observed if the thickness of the thin film is less than the coherence length of the incident light wave. Okay, thank you.